Hi everyone, welcome to ChemShot. Today's our topic is orbital selection principle. Why do we use it? Well, we know that different hybridization require different orbitals. And in some of orbitals, we cannot decide that which orbitals to be used and which not. But not every hybridization is that complicated. For example, sp hybridization. इसमें हम लोग p ऑर्बिटल में px, py या pz तीनों में से कोई भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि हम जानते हैं p orbital consists of px, py and pz. Please remember that wedge and dash method are not to be used to explain the orientation of any orbitals. I have just used them to convey that this lobe is coming towards you and this lobe is moving away from you. So this is just for our understanding and convenience. We can see that all of them have same energy and are in identical shape. So whichever to be used, they will give same molecule SPX, SPY or SPZ. They will have same energy and identical in shape. So we don't need orbital selection principle in p orbital. But that is not the case in d orbital. You can see that d orbitals have different orbitals. dxy, dyz and dzx have non-axial lobes, while dx square, y square and dz square have axial lobes. So if we use these orbitals, they will end up in giving different kind of molecules, different kind of hybridizations. So we cannot use them randomly. We need to set some rules so that we know that in which of the hybridization, which orbitals are to be used. So let's start with the rules. The first rule is energy gap between the orbitals that are to be used. Here sp3d2 and d2sp3. You must be knowing both of this hybridization. मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे d2 बाहर लिखा है, इसका मतलब है आउटर शेल की d ऑर्बिटल्स यूज्ड हुई है, और यहाँ पे d2 अंदर लिखा है, दैट मीन्स अंदर के शेल की d ऑर्बिटल यूज हुई है. सो when I am talking about sp3d2, I will be talking about 4s, 4p and 4d. But if we are talking about d2sp3, then we will be talking about 3d, 4s and 4p. Now you can clearly see the difference between the energy gap between the orbitals. The delta E2 shows the energy gap of sp3d2 and delta E1 shows the energy gap between d2sp3. When we compare, we can see that delta E1 is very small in compared to delta E2. So we always prefer the orbitals which have less energy gap. Therefore, we always prefer d2sp3 over sp3d2. Is that clear? Now the second one, that is the symmetry of orbitals. We all know that p orbitals have axial lobes. So when we use p orbital in any hybridization, we use d orbitals which are axial in nature, so that they can overlap with each other in better way and it will be a strong bonding. But if we are not using p orbitals, then we can use the d orbitals which are non-axial. That doesn't matter if p orbital is not used. Suppose sp3d. Here we are using p and d, both orbitals. Therefore, we have selected dx square, y square or dz square. Why? Because their lobes are axial. Similarly, in sp3d2, we have here we need two d orbitals. So we have selected both dx square, y square and dz square because both of them have p orbital in hybridization. While in d3s, we don't have any p orbital. So we have used dxy, dyz and dxz orbitals. But there is an exception, as chemistry has everywhere. The SD hybridization will use dz square, but
एज आई एक्सप्लेन दैट डजेंट मैटर बिकॉज यहाँ पे p ऑर्बिटल है ही नहीं, और s ऑर्बिटल तो आपको पता ही है वो नॉन डायरेक्शनल है, इसके साथ कोई भी ऑर्बिटल होगी वो बेटर बॉन्डिंग ही करेगी। तो इट डजेंट मैटर हम लोग d ऑर्बिटल में कोई भी ऑर्बिटल यूज़ करें इफ़ p ऑर्बिटल इज़ एब्सेंट। द थर्ड रूल इज़ स्टेबिलिटी ऑफ जियोमेट्री फॉर्म्ड। अब हम देखिए जैसे कि sp3d हाइब्रिडाइजेशन है, अब इसमें कोई एक ही d ऑर्बिटल ले सकते हैं। इसमें अब p ऑर्बिटल अगर प्रेजेंट है तो हमें जाहिर सी बात है वी विल चूज़ द d ऑर्बिटल विच आर एक्सियल इन नेचर। तो इधर इट कैन बी x स्क्वायर y स्क्वायर और इट कैन बी z स्क्वायर, बट नाउ विच टू बी यूज्ड अमॉन्ग देम। तो उसके लिए हम देखते हैं कि कौन से ज्योमेट्री जो है वो ज़्यादा स्टेबल है। अगर हम लोग dx स्क्वायर y स्क्वायर यूज़ करते हैं तो उसमें ट्रायगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री फॉर्म होती है, लेकिन अगर हम लोग dz स्क्वायर यूज़ करते हैं तो उसमें स्क्वायर पिरामिडल ज्योमेट्री फॉर्म होती है। तो अब हमें ये देखना है कि इन दोनों में से ज़्यादा स्टेबल कौन होता है, वो वाली ज्योमेट्री फॉर्म होगी, मतलब वो वाली ऑर्बिटल जो होंगे वो ज़्यादा यूज़ होंगे sp3d हाइब्रिडाइजेशन में। अगले वीडियो में हम ये दोनों डिस्कस करेंगे, लेकिन इनके अलावा sp3d2 और sp3d3 भी डिस्कस करेंगे। थैंक यू।